Hello and welcome back to the channel. So today we are gonna react to some weird stories on the internet that I found on different platforms. Just to let you know, मैंने किसी का भी story पढ़ा नहीं है. I just blindly trusted the comments, the top comments that I found on each platform. And उनका reaction देख के I felt intrigued. I felt like okay, I should read the story. So let's start with that. A few years ago, I was walking through the woods of the beaten track a bit, and I smelled this really overpowering sweet smell. Okay. Being nosy, I pulled back the undergrowth to have a look and found a dead body. The guy had clearly been there a while and was not looking great, all swollen and green and black with various runny bits. Okay. The local wildfire had also been dying well for a few days. I called the police, who told me to wait with the body until they arrived. Very sensible decision. यहाँ पे आपको पुलिस को बुलाना चाहिए. Being in the middle of nowhere, it took a while for them to arrive, and it got dark. And I was just sat there in the dark with him for a long time. Bro, first of all, पुलिस को बुला के आप वेट कर रहे हो, दैट इज ओके, लाइक दैट इज योर ड्यूटी, बट पास में क्यों बैठना है आपको? आई मीन, अगर मैं किसी लाश के पास बैठा हूँ, मैं आई वुड इवन लाइक नॉट इवन लुक एट इट फर्स्ट ऑफ ऑल. अब मैं थोड़ी दूरी बना के बैठूंगा अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो. ओके, मूविंग अहेड. इट टर्न्ड आउट ही हैड कमिटेड सुइसाइड. For a long time afterwards, I had dreams about him and he would talk to me and not nice things. Okay. Mainly about how he was angry and I had disturbed his resting place and he wanted me to kill myself. Oh my fucking god. Probably just my imagination, but all pretty disturbing at the time. He still turns up in my dreams from the time to time, and no doubt he will be tonight after typing. Oh my god. Bro, there is a thing about negative energy. There is a thing about all these weird theories that revolve around the internet about the dead people, about the energy that they have. मतलब वो कई तरीकों से नॉर्मल भी होता है क्योंकि हम आए तो किसी ना किसी दिन जाएंगे, बट आई जस्ट realized that in the beginning of the story, this person mentioned that overpowering sweet smell. Bro, I mean, I as a if I want to give an opinion on this, I feel this was not a and it was a murder which was trying to be, मतलब जिसको कवर अप करने का ट्राई किया जा रहा था. बट oh my fucking god man, वो स्मेल वाला चीज आफ्टर द एंड ऑफ द स्टोरी वो उसके सपने में आता है, एंड द लास्ट सेंटेंस दैट ही स्टिल turns up in my dreams and from time to time, no doubt he will be tonight after typing this. Then why the fuck would you type that? Whew. Okay. About 2 years ago, I was driving home from a family reunion pretty late at night, and the drive was about 2 hours. Okay. I didn't stay the night because I had to be back for the walk the following day. Most of the drive was on the roads with dense bushes and trees on the either side. एक नॉर्मल रोड जैसे दिखता है, एक बीच में रास्ता है, दोनों तरफ से पेड़ पौधे हैं. ओके. The real creepy ones you see a lot in the movies. These are creepy, but this is nature. We see this on most of the roads, every part of the world. So yeah. Anyway, I have been driving about 45 minutes and I was starting to get really tired. You know how sometimes you just suddenly become really tired out of nowhere? Well, yeah, that happened to me. I knew I was not going to last, but it didn't come across any place that I felt I could park and safely sleep. एक गलती मुझे होते हुए दिख रही है, but moving ahead. Anyway, after it became clear to me that I was not going to find a place to pull up, my tiredness wasn't going away. I did something very questionable. Okay. I pulled over to the side of the road into the grass behind some bushes
to try and hide my car from anybody who was going to come past. Okay. अभी मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है, मुझे ऐसा सेंस आ रहा है. The roads were not empty. I came across another car every few minutes or so. Okay, normal. I made a mental note that the time was 11:22. Then I fell asleep. Okay, 11:22 को मैडम सो गई, दिमाग में रखते हुए कि अभी 11:22 हुआ है. Some time later, I was awoken by a scratching sound. I looked at the clock. It was 11:50. Okay, आधा घंटा हो चुका है. The sound stopped after a few seconds, and because I was extremely tired, I didn't bother looking around and simply went back to sleep. I was later awoken by the same sound. Now the time was 12:40. Okay, तो 11:50 को मैडम उठी थी. 11:50 से अभी 50 मिनट हो चुके और वो सेम साउंड से वापस उठ गई. This is what I understood. This time it really freaked me out because the sound didn't stop. The thought ran across my mind that it was just an animal inspecting the car, but why would it return almost an hour after it had the previous time? Very sensible. I looked in my rear view mirror and just managed to catch a glimpse of something running away into the forest. Okay. यहाँ से थोड़ी चीज़ें बिगड़ती हुई मुझे दिख रही है. Okay. Now at the time I thought it was the damn hook killer. You know, the one that scratched the couple's car and then slaughtered the guy when he got out to investigate. I'm not aware about the story. This is a new story. जिसके बारे में वो रेफ़र करिए कि किसी का गला काट के वो बंदा भाग जाता है. I do not know anything about the story. So as a layman, I would still continue. Fuck that. I thought to myself. So I got the hell out of the fucking car, parked off the side of the road with the driver side door open. Galti number 2. I slowed down just to look to see if anyone was there. जो कि वहाँ पे कोई नहीं था. There wasn't. Then I looked in my rearview mirror. I didn't see anything, and all of a sudden, this guy comes sprinting around the corner. He starts screaming at me, shouting stuff like, "Hey, you, get the fuck out of your car now." I noped the fuck out of there and sped off. I never saw the guy again. Moral of the story is, don't fucking sleep on the side of a deserted road. Okay. So based upon this, I have a similar experience, but I think my experience is not as onto the face as this one. एक बार क्या हुआ कि मैं अपने दोस्तों के साथ भुवनेश्वर में जब था, दोस्तों के साथ मैं कहीं पे गया हुआ था, एंड इट वाज अ हिल स्टेशन काइंड ऑफ थिंग, जो कि मेरे घर से एटलीस्ट 7-8 किलोमीटर दूर होगा. हम सब स्कूटी पे थे. आई वाज इन स्कूल दैट टाइम, सो इट इज़ अ फ्यू इयर्स बैक. स्कूटी पे जब हम लोग थे, हमें ये चुल था कि हम रात के टाइम उधर जाके ऐसे चिल मारते थे, एंड फॉर 1.5 hours देन आफ्टर ट्यूशन वी यूज्ड टू गेट बैक. तो एक दिन क्या हुआ, वी वर जस्ट गोइंग टू दैट स्पॉट. द एनर्जी सीम्ड लाइक वेरी ऑफ दैट डे. मुझे पता भी नहीं है क्यों लग रहा था, बट हमें लग रहा था. और जब हम उस एरिया में पहुंच रहे थे, वाइल गोइंग इन द स्कूटी, वी सॉ अ ओल्ड पर्सन जो कि रोड पे चले जा रहा है. लाइक ओल्ड, ही वाज लाइक 60 ईयर ओल्ड, जस्ट थ्रू द, मतलब दूर से देखकर जितना पता लगता है. हम गए, हम वहाँ पे चिल कर रहे थे, एंड वी डिडंट सी दैट पर्सन जो कि बुढ़ा चल के आ रहा था. हम उसके आगे उसको क्रॉस करके आ गए, बट अगर वो सीधा चल के आ रहा है, वो कभी ना कभी हम तक पहुँचेगा या फिर वो वापस घूम के चला गया होगा. दैट इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी, बिकॉज वो सीधा रोड था. एक टाइम पे क्या हुआ कि all of a sudden it clicked my mind that, bro, we saw a old person walking towards this side, but he never reached here, right? That is just inside my head. मैंने किसी को बोला नहीं ये चीज़, because मुझे नहीं लगा कि किसी ने उस बुड्ढे को नोटिस भी किया है. 1 घंटा बीत गया था, थोड़ा बारिश मतलब दिख रहा था आसमान पे, तो वी थॉट कि लेट्स गो होम, बिकॉज हमारे पास रेन कोट्स नहीं था, एंड जस्ट इन केस इट रेन्स, दैट इज़ नॉट अ सेफ एरिया टू बी स्टक, यू नो, जब बारिश हो रही हो. तो हम निकलने वाले थे, हम निकलने वाले थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई स्टिल हैव द क्लियर विजुअल्स इन माई माइंड. स्कूटी स्टार्ट ही कर रहे थे, हमारे पास 2 स्कूटी थी, हम 4 बंदे थे. स्कूटी स्टार्ट हुआ,
हवा चल रही थी बहुत जोर से. आउट ऑफ नोवेयर ऑल ऑफ अ सडन आर, मतलब क्या बोलते हैं, हमारी नज़र सीधा मिरर पे गिरा, जो स्कूटी का साइड मिरर होता है. Fucking we saw the same old guy running towards us. एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हमें दिखा वो भाग के आ रहा है भाई. At that, I'm getting goosebumps by the time I'm telling this, if you can see. I don't know. मतलब वो विजुअल आज तक मेरे दिमाग में है, कहीं ना कहीं वो एक फोटो की तरह रह गया मेरे दिमाग में. एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, नॉट इवन 1 सेकंड मैन, बस ऐसे देखा खत्म. बट वी डिडंट सी हिम कमिंग दिस साइड, एज आई मेंशन. वो अगर इधर आया ही नहीं है तो उधर से भाग के आया कैसे, और दूसरी बात भागा कैसे वो. आई थिंक दैट इज स्टिल अ मिस्ट्री टू मी. स्कूटी भगा के हम सब निकल गए थे उधर से, बट I still cannot digest the fact that something like this can be happening to anyone, because मैं as a person कभी, me as a person, I've never experienced anything paranormal in my life ever, although I do believe that there is negative energy and positive energy, जिसको कि हम शैतान और भगवान मानते हैं, दोनों साइड एग्जिस्ट करते हैं. बट आई नेवर केम थ्रू एनी एक्सपीरियंस लाइक दैट, एंड आई डू बिलीव इन गॉड. I do believe in the fact that there is a superior power which is above us. So, I mean, yeah, I think that's it for this video. I think I hope this is a new format in my channel. आपको मज़ा आया होगा. If मज़ा आया, let me know in the comments. Hit a like to this video, and I think I'll see you. Bye bye.